Shall we start? Yes, sir. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. तो द फर्स्ट थिंग इज द व्हाई वी आर स्टडिंग, why common names and famous names are important for us for the UPSC syllabus. We will make this session interactive since it is live one, so we will make it interactive, and then when we switch to recorded video, then we can do doubt sessions. Okay. Okay, sir. तो कोई बताएगा? So sometime only common name is given in the question, so without which we cannot proceed. And second, for value addition also common names helps. Great. And what about others? Why we need knowledge of common names, IPSC names or nomenclature, etc.? Sir, because every time drawing the formula is not feasible, so that's why the common names and the UPSC names are essential for that purpose. Okay, great. तो देखो, Sir, the first thing is कि question itself have common names. Okay. Suppose let me give an example. If there is a question in UPSC कि new methyl chloride. Okay, new methyl chloride versus methyl chloride. The question have asked कि how many number of alkene products will be found in each case. Okay. Then second question is regarding rate, which will react faster. So can you attempt, if you don't have the knowledge of, new methyl chloride and methyl chloride, can you attempt this question? No, sir. No, sir. So do you got the first logic? Why common name we are studying, why common name is important? Because sometimes question itself have, those common names. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. yes, sir. And second example is like there is a question recently in the UPSC, I guess 2019 or 2020, कि erythro 2,3 dibromobutane when treated with I minus gives. So can you write a reaction by just reading this question? If you don't know what is erythro, can you write? No, sir. No, no. So what we see here, we can write this thing, 3, then 1 and 2. 1, 2, 3, 4. Okay. So these are the positions of bromine. But how can we know what is erythro, what is 3U? So this can be represented in two manner, in Fischer projection. Okay. In erythro, both PR would be on same side and carbon will be on the longest side. So this will be erythroisomer. The question is asking if it is treated with I minus, what will be the product? Then secondly, Br, Br, H, H, Me. So this would be 3U. So do you got what is the importance of so question itself? The first logic is question itself contains some common names or nomenclature terms. What is erythro, what is 3O, what is meso, etc.
Can anybody tell me what is difference between erythro and meso? So chirality, क्या कायरलिटी पे क्या हो जाएगा? मतलब ऑप्टिकल बिहेवियर इनका अलग अलग होगा. In meso Okay. compound, symmetry is present. Hmm. Okay, this is symmetry. And what about this erythro? अगर यूपीएससी में ये सवाल पूछ दे, लाइक 2020 में क्वेश्चन था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कार्बोकैटायन एंड कार्बोनियम आयन, can we expect similar? If this is asked in UPSC, okay, this has been asked, this is the very basic question. Can't we expect another question can be asked in 5 markers कि what are the differences between erythro and meso? बेसिकली तो मीसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इरिथ्रो कंपाउंड्स होता है ना वो ऑप्टिकली एक्टिव रहता है. तो एक तो ये डिफरेंस है और दूसरा सिमेट्री का नहीं, पूछ रहा है. वो तो उसकी प्रॉपर्टी है ना. मैं तो डिफरेंस पूछ रहा हूँ. जैसे मैं बताता हूँ, देखो, ये होता है कि जो एरिथ्रो आइसोमर, जब एरिथ्रो आइसोमर के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी तो मीजो हो जाएगा. यस यस यस. तो में से अगर मैं प्लेन सिमेट्री निकाल दूं तो व्हाट वी गॉट एरिथ्रो. तो इट वर्क्स बोथ वेज. So I'm giving you an example. Suppose this is a molecule. We have methyl, then we have A, B, and B. Okay. So if we cut from here, okay, so what we see, this part and this part are equal halves. Am I right? It means we can say this is the plane of symmetry. Just a minute. Okay. So this is the plane of symmetry. But what if I replace this whole thing with a little change? M is there, M is there, A is there, A is there, B is there, but this is C. So what's the difference? Here it comes C. तो बताओ ये क्या है? This will be termed as meso. This will be termed as erythro. Why? Because there is no POS is absent. Do you got this? This is a very important point. Do you got this point? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So if there is a question based upon कि this erythroisomer undergoes E2 elimination, and if a compound meso is undergoing E2 elimination, can we predict the product now? Because there will be some molecule will be like आप लोग अपने पेन और कॉपी से ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो. Draw this structure. Meso 2,3-dibromobutane. Everybody. And then
क्या डिफरेंस दिख रहा है इसमें? यहां पे मैंने क्या किया, H का एक आइसोटोप ले लिया, वी हैव जस्ट सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन विद इट्स आइसोटोप, तो व्हाट वी गेट कि दिस मीजो बिकम्स एरिथ्रो, है ना? व्हाट वी हैव डन, isotopic substitution. So these are the very, very basic concepts, and these concepts are directly asked within the question. If not asked in the question, then what we can do, while writing the mechanism, we can use these terminology within our answers. And if we write कि this is the mesoisomer, since there is a plane of symmetry, so examiner will be very happy. It will reward you 0.5 marks more on these small points. So let us start the main segment of today's lecture. So all these points are to just make you understand why we are studying this. Okay, so first is the question itself contains common names. If we don't know these common names, we can't attempt the question. Second thing is कि there is these common names can do the value addition thing, and these value addition things can reward us per question 0.5 to 1 marks extra if we do this only. Okay, so do you got everyone got this? Yes, sir. Sir. कि ये छोटी छोटी चीजें कब हम करेंगे? सपोज करो इफ वी देयर इज अ क्वेश्चन कि सब लोग अपने पेपर पे ट्राई करना है इसको, ठीक है? देयर इज मीथेन, दिस इज बेंजीन से फिनॉल बनाना है, देन यू हैव टू मेक सैलिसिल्डिहाइड, देन salicylic acid, then you have to make aspirin, then you have to make salol, then you have to make oil of wintergreen. Ab this is a very complex question, but why I have chosen this question? I just want to frame a question which can lead to multiple routes. Okay, so can you attempt this question without knowing what is the structure of salicylic? No, sir. Can you attempt this question without knowing the name of salicylic acid? What is aspirin? What is salol? What is wintergreen? के भी questions में you will have the utility. So you must have great knowledge about all this thing. Okay, so there is a very famous question asked in 2022. What is the question? कि this is 1,3-butadiene reacts faster किसके साथ? With maleic anhydride, but slower with ethene. So what you see, three names: ethene is there, maleic anhydride was there, and then 1,3-butadiene. Can you attempt this question without knowing the structure of maleic anhydride? No, sir. This was 10 marks question. So these are the very recent questions. Okay, if suppose there is a second version, if this is asked, matlab name is given, what if give product and this is given, no labeling of molecule is done, and then we have thermal. तो अब वैल्यू एडिशन कैसे करना है? व्हाट वी डू कि मैं इसका कॉमन नेम लिखूंगा 1,3-ब्यूटाडाइन और मैं इसका नाम लिखूंगा मैलिक. एग्जाम में नहीं दिया है, एग्जाम में क्या बोला है? गिव प्रोडक्ट. सेम क्वेश्चन अब अलग तरीके से पूछ रहा है. गॉट इट? डज एवरीवन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just let me check if someone trying.
तो दिस इज अ वेरी बेसिक पॉइंट यू मस्ट नो. ओके. तो अब यहां पे आप क्या कर सकते हो कि फास्ट हो रहा है. क्यों फास्ट हो रहा है? क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आपने पहले अटेम्प्ट किया है, अगर नेक्स्ट ईयर ये सवाल आएगा तो आप लिख सकते हो कि दिस दिस रिएक्शन विल बी फास्ट. व्हाई इट इज फास्ट? बिकॉज देर इज होमोलुमो गैप इज लेस होमोलुमो गैप. So I will explain these concepts in the respective chapter. I am just trying to emphasize कि what is the importance of common names in two ways. If it is involved within the question, if a question is asked, but the molecules are not labeled, the processes, the mechanistic processes which are not labeled, we can do the labeling part by incorporating this knowledge. Okay, so let's start. तो अब देखो पिक्रिक एसिड क्या होता है. पिक्रिक एसिड इज अ मिसनोमर. व्हाट इज मिसनोमर? कि पिक्रिक एसिड रिवील्स, मतलब इट हिंट्स कि एसिड इज समथिंग which have C double OH group, but this picric acid is not having any sort of C double OH group. Why it is a misnomer? Do you got this? Everyone? Anybody? Yes, sir. Do you got Yes. this point? कि Yes, sir. picric acid is a misnomer. And why I have chosen this picric acid molecule? Because it has been asked कि picric acid is stronger acid. Picric acid is stronger acid than acetic acid. If you don't know the structure of picric acid, how can you attempt this question? Okay, just write a question. Okay, write this question in your notes. What is the question? कि which is stronger? Question is which is more acidic? Picric acid versus anybody? Which is more acidic? Picric acid or acetic acid? Picric acid. Why? Why? सर NO2 का माइनस सेम लगेगा एंड NO2 की वजह से OH जो ग्रुप है वो आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, तो रेजोनेंस कम हो जाएगा एंड लोन पेयर का जो इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा. अच्छा, और कोई? एनीबॉडी? इसमें सर माइनस एम इफेक्ट लगेगा इसमें एक्चुअली. सर एक्चुअली माइनस एम इफेक्ट सर उसको ओवरशैडो कर देगा प्लस एम इफेक्ट को. तो माइनस एम इफेक्ट की वजह से पिक्रिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा. सर उसका कॉन्जुगेट प्लस स्टेबलाइज हो जाएगा बिकॉज ऑफ NO2 ग्रुप, फ्री NO2 ग्रुप. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो NO2 जो ग्रुप्स है ना, ये पहले तो क्या करेंगे कि माइनस एम तो लगा ही रहे हैं, प्लस एडिशनली 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और बनेंगे, यानी 5+3. ठीक. जबकि एसिटिक एसिड में केवल 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे. तो ये मैं जीओसी में पढ़ाऊंगा. जीओसी में आई विल टीच दिस. बट व्हाई आई हैव टेकन दिस पॉइंट पिक्रिक एसिड, और ये कहां से रिलेटेड है पीवाईक्यू से, वो चीज मैंने आपको बता दी. तो अगली बार ये क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है, यस सर. क्लियर है सबको? यस सर. नो. यस सर. अब अगला अगला क्वेश्चन है स्क्वायरिक एसिड. स्क्वायरिक एसिड का कोई स्ट्रक्चर बना सकता है? अभी ये भी यूपीएससी का सवाल है. 2019 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा है. किसी को याद आ रहा है कुछ ऐसा था? Yes, sir. एरोमेटिसिटी और शायद क्वेश्चन में था ये, हाँ. एरोमेटिक प्रूफ करना था. और बताओ कहाँ पे और चेंज होगा? सर लाइक ये स्ट्रक्चर सही है? सर वो डबल बॉन्ड वो आ जाएगा. सर वो डबल बॉन्ड वो आ जाएगा, मतलब कहाँ पे? वन डबल बॉन्ड ऑन 1 to डायोन टू बन कार्बन. जाएगा वो. डबल बॉन्ड ऑन अदर टू ऐसा? कार्बन.
यस सर। ऐसा। यस सर। यस सर। हाँ सर, इससे तो वाइट एरोमेटिक इज प्रूव हो रहा स्क्वायरिक। हाँ, इससे प्रूफ हो जाएगा। वाइट इज स्क्वायरिक क्योंकि ये स्क्वायर शेप का है ना। आया समझ। यस सर। तो स्क्वायरिक एसिड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्क्वायरिक एसिड वर्ड में दे दिया, देन यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू ड्रॉ इट। ठीक। अगला आप देखते हैं दूसरे एसिड्स कौन से हैं। बेंजोइक एसिड में डेरिवेटिव्स, तो इसका टेक्निक क्या है, पिट या टिप। तो देखो, TIP। टी से टेरिप्थैलिक एसिड, आई से आइसोप्थैलिक एसिड, और पी से थैलिक एसिड। गॉट इट। यस सर। ओके। अब देखो, इसको याद कैसे करेंगे, हाउ विल मेमोराइज। कि वी टेक द बेंजोइक acid, then what we do, कि we take another suitable as one ortho, then meta, then para. तो para would be terephthalic, meta would be isophthalic, ortho would be thalic acid. तो TIP याद हो जाएगा। यस सर। ओके। व्हाट इफ वी हीट, व्हाट इफ वी, अब क्वेश्चन क्या यूपीएससी ने पूछा है कि क्वेश्चन में एक स्टेप था कि ये क्या है, ये बताओ कौन सा एसिड है, बताना तुम लोग। दिस वन। थैलिक एसिड। पहले अब कैसे? पूछा क्या था, ये पूछा क्या था, एक बार हीट किया था और एक बार हीट करके अमोनिया के साथ हीट किया था, तो बताओ क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। यहाँ पे जो बनेगा वो थैलिक एनहाइड्राइड, पहले कार्बोनेटेड। यानी वाटर, वाटर निकल जाएगा। ये हो जाएगा थैलिक ये थैलामाइड हो जाएगा। आया सैलामाइड। समझ। तो यस सर। हमने क्या देखा कि हम एक तो इससे ये बना सकते हैं, ठीक, दूसरा उससे ये भी बना सकते हैं। तो कोरिलेशन समझ में आ रहा है, बिल्कुल प्लेनली रट नहीं लेना है आप लोगों को, है ना। यू नीड टू प्रैक्टिस इन बिटवीन। इफ यू आर अ फुल कोर्स स्टूडेंट देन आई विल टीच यू। इतना सबको समझ में आ रहा है। जी सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो इस तरह से ये जो पूरा पीडीएफ है, ये मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। मैंने इस पीडीएफ को जो शेयर किया था, इसको अपडेट किया है, तो मैं इसको अभी फिर से आपको सेंड करूंगा। अब आप लोग का काम है, इसमें लगेगा आपको 1-1.5 घंटे। जैसे मैंने कुछ होमवर्क कॉर्नर भी दे दिया है कि ये आपको ड्रॉ करना है। तो अब आप क्या करोगे, ये पीडीएफ मैं आपको शेयर फिर से कर रहा हूँ, अपडेटेड पीडीएफ। ये आप इसमें, आप लोग का जो होमवर्क मिला है, उसको खुद से अटेम्प्ट करोगे। इसके बाद हम लोग कल से 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे लाइव क्लास 2-3, जब तक ऐप रेडी नहीं हो जाता, ऑर्गेनिक वाली क्लासेस लोग लाइव ले लेंगे। किसी को दिक्कत नहीं है ना इसमें। जब ऐप रेडी हो जाएगा तो हम लोग रिकॉर्डेड में चाहेंगे, और फिर जिसको डाउट्स होंगे